Professor Benzine. This is Professor Benzine. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the third chapter of class 11 chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In this video we will discuss solutions to exercise questions 1 to 8. So let's begin. First question is, what is the basic theme of the organization in the periodic table? Periodic table पे जो organization हुआ है elements का, उसका basic theme क्या है? The basic theme of organization of the elements in the periodic table is to classify the elements in the periods and groups according to their properties. This arrangement makes the study of elements of their compounds simple and systematic. In the periodic table, elements with similar properties are placed in the same group. तो बेसिक रीज़न क्या है हम क्लासीफाई क्यों किए एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. तो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए जो आसानी हो, इसके लिए हमें क्लासीफाई करना पड़ा. और ऐसे एलिमेंट्स जिनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है. विच important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to that? मेंडलीव ने कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था और डिड ही स्टिक टू दैट? मेंडलीव्स अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल बाय एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था ऑफ द एलिमेंट्स. He arranged the elements in the periods and groups in order of the increasing atomic weight. He placed the elements with the similar properties in the same group. Similar properties वाले elements को same group में रखते हुए increasing order of atomic weight से elements were classified into periods and groups arrange किया गया था on the increasing order of atomic weight. However, he did not stick to this arrangement for long. He found out that if the element were arranged strictly in order of their increasing atomic weight, then some elements did not fit with the scheme of classification. लेकिन पूरे टाइम वो अपने इस बेसिक प्रिंसिपल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर नहीं चले. उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर सारे ही एलिमेंट्स को स्ट्रिक्टली ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर रखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, वो पीरियोडिक नहीं होती. Therefore, he ignored the order of atomic weights in some cases. For example, the atomic weight of iodine is lower than that of tellurium. Still, Mendeleev placed tellurium in group 6 before iodine in group 8. लाइट वेट होने के बावजूद आयोडीन से पहले टेलीरियम को रखा गया था, जबकि बाद में आना चाहिए बिकॉज इट इज़ हैवियर. आयोडीन इज लाइटर देन द अदर. सो simply because iodine properties are so similar to fluorine, chlorine and bromine. अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से आयोडीन को क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रखा गया, जबकि टेल्यूरियम जो है उसको बाद में डाला गया, जहाँ पे एटॉमिक वेट का जो बेसिक प्रिंसिपल था इंक्रीजिंग ऑर्डर वो चेंज हो गया, डिसेंडिंग में डाल दिया उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the basic difference in approach between the Mendeleev periodic table and the modern periodic table? Modern periodic table और Mendeleev's periodic table के approach में basic difference क्या है? Mendeleev's periodic table states the physical properties and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. On the other hand, the modern periodic law states that the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. Mendeleev periodic table और modern periodic table में जो definition of basic difference इतना है कि मेंडलीव ने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. सो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक वेट पर बेस्ड था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इसके बाद on the basis of quantum numbers justify that the sixth period of the periodic table should have 32 elements. क्वांटम नंबर के बेसिस पे जस्टिफाई करिए कि सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होने चाहिए. इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो पीरियड नंबर होता है फॉर द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होगा that will be the period number in the group. Each period begins with the filling of the principal quantum number n. The value for n for the sixth period is 6, so n equal to 6. Azimuthal quantum number L can have values from 0, 1, 2, 3 and 4. जब 6 आ जाती है n की वैल्यू
The azimuthal number can be 0, 1, 2, 3 and 4. According to Aufbau principle, the electrons are added to different orbitals in order to the increasing energies. Increasing energy के order में orbital fill होती है. The energy of the 6th d subshell even higher than that of 7s subshell. 6d की energy is higher than 7s subshell. In the 6th period, the electrons can be filled only in 6s, 4f, 5d and 6p subshells. Now 6s has 1 orbital, 4f has 7 orbitals. outermost लिखते हैं. 6s में 1 orbital, 4f में 7 orbitals, 5d में 5 orbitals और 6p has 3 orbitals. The total number of orbitals there are 1 plus 7 plus 5 plus 3 is 16. Orbital available according to the Pauli's exclusion principle. Each orbital can have accommodate maximum of 2 electrons. तो 16 orbital है, maximum 2 electron, तो total electrons is 32. Hence there are 32 elements in the 6th period of the periodic table. Next, in terms of period and group, where would you locate the element with z equals to 114? Atomic number 114 कहाँ पर place किया जाएगा in respect to period and group? Element with atomic number 114, z equals to 87 to 114 present in the 7th period of the periodic table. 7th period में आएंगे from atomic number 87 to 114. Thus, the element 114 is present in the 7th period of the periodic table. Up in the 7th period, first 2 elements, that is with z equals to 87 and 88 are s block elements. Next 14 elements, including z equals to 89, that is excluding 89, which is actinium, that is those of 9, z equals to 90 to 103 are f block elements. 89 से 90 actiniums, actinides बोलते हैं उनको, f block elements हैं. 10 elements z equals to 89 to 104 minus 104 से 112 तक are d block elements, and the elements z equals to 113 118 are p block elements. So 113 से 118 एलिमेंट जो है वो p block में आते हैं. Therefore, the element with z equals to 114 is the second p block element in the 7th period. 7th period के p block का second element है 114. Thus, the element 114 is present in the 7th period and the 4th group of the periodic table. Period number 7, group number 4. That is where element number 114 will be found. Atomic number 114 will be found in this place. Next, write the atomic number of the element present in the 3rd period and the 7th group of the periodic table. 3rd period और 7th group में जो element present है उसका atomic number क्या होगा? This question is reverse of the previous question. There are 2 elements in the 1st period and 8 elements in the 2nd period. 3rd period starts with atomic number z equals to 11. Now there are 8 elements in the 3rd period. Thus, the 3rd period ends with atomic number z equals to 18. That is, the element in the 18th group of the 3rd period is z equals to 18. Hence, element in the 17th group of the 3rd period has z equals to 17. 18th में atomic number 18 है, तो 17th में पूछ रहा है कौन सा होगा third period 17th group. तो 17th group में it will be z equals to 17. So we are talking of chlorine here. Next question. Which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory and Seaborg Group? कौन से एलिमेंट का नाम लॉरेंस बेकली लेबोरेटरी ने दिया था और कौन सा एलिमेंट का नाम सीबर्ग ग्रुप ने दिया था? So Lawrence Berkeley Laboratory gave lawrencium, which is atomic symbol Lr, atomic number 103, and becquerelium Bk with atomic number 97. While Seaborg's group gave Seaborgercium Sg with atomic number 106. Why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? Same group के elements की physical और chemical properties same क्यों होती हैं? The physical and the chemical properties of element depend upon the number of valence shell electrons. Electrons present in the same group have the same number of valence shell electrons. Elements in the same group मतलब कि जो physical chemical properties है वो number of valence shell electron पर vary करती हैं on the basis of number of electrons in the valence shell, और same group के elements के
wherein shell में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं. देयरफॉर द एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. इसलिए एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द.